Hello everyone, welcome to my channel BR Tutorial. मी बीणा राउत your tutor and mentor. आशा करछि तमे मन सब भलरे थिबो. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants or especially in angiosperms. Angiosperms are otherwise known as closed seeded plants. Okay, because seeds are enclosed within the fruit wall. Very common example of angiosperms is तमे जहाँ चारि पाखरे देखुच धर चाइना रोज देखिल कि आम फ्रुट्स जिते देखुच फ्लावर्स जिते देखुच सब एंजियोस्पर्म प्राय पाखापाखि आम चारि पाखरे अधिकांश प्लांट आम जहाँ देखु सब प्राय एंजियोस्पर्म्स ही होता जैसे आंब पणस नड़िया कदली फूल गछ भितर मंदार टगर एक्सेट्रा सब प्राय अधिकांश होता एंजियोस्पर्म्स है. सो इन ए प्लांट when it reproduces sexually, it must have a sexual sex organ or reproductive organ. So in angiosperms, the reproductive organ is flower, stem, leaf, root. These are vegetative parts, but flower is the reproductive parts. And if you observe in any typical flower, it has four holes arranged in a condensed stem known as thalamus. Look at the picture, which is a LS of flower. LS means longitudinal section. Gote flower को जदि आमे देखो, suppose this is a flower of China rose. आकु आमे जदि longitudinally हाफ करिवा, लंबारे हाफ करिवा, ताले आमे गोटे एई भलिया पिक्चर पाइबा. तो एठी आमे क्लियरली देखि परिबा different holes, 4 holes of a flower. तमरा मॉर्फोलॉजी रे तमे सब जानि थिबो पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तरे मु आउट के तुमको जस्ट कहि दोचे. The flower has a long stalk like structure known as pedicel. And on the thalamus 4 holes, lowermost hole generally is a calyx hole. The individual members of calyx hole are known as sepal. Then there is a colored hole known as corolla hole individual member को कौन कहते petals. Okay, similarly the third hole and fourth hole, these third and fourth hole are important in respect of reproduction. Calyx hole and corolla hole indirectly helps in the process of reproduction, but they are not direct reproductive parts. Reproductive organs are mainly third and fourth hole, जोटा कि बर्तमान कहबी. तो third hole is androecium. Third hole is androecium. This is the male sex organ of the flower. Androecium hole comprises of one or many stamens. These are all stamens. So 5, 10, 4, any number, indefinite number of stamens may be present in a flower. Okay. Then this is the male sex organ. The female sex organ is known as gynoecium. This is the fourth hole. This is the female sex organ. And the individual member of gynoecium holes are known as carpel or pistil. Okay. So this is the gynoecium hole and it is the carpel. Sometimes carpels are united. Outside ru देखिले तुम गोटी carpel वाला देखा जियो, but inside if you take TS of the ovary, the lowermost swollen part of this carpel is known as ovary, and there is a long stalk like structure above the ovary that is known as style, and tip of the style is known as stigma. Similarly, in the each stamen has a stalk like structure that is known as filament, and there is a lobed structure at the top known as anther is main part. Similarly, this ovary is the main part, okay, of the carpel. Sometimes carpels remains united
so that it looks like a single carpel from outside. But actually, if you take transverse section of this ovary portion, you can see many lobes present. So according to the observation of the number of lobes and number of stigma, you can confer the number of carpels in a gynoecium whole. Okay. When carpels, but sometimes carpels remain free, and that case is known as apocarpus. And when carpels remain united, that condition is known as syncarpus condition. Okay. So this is a structure of flower. तुमको जदि मुझे देखदेवी गोटे ओरिजिनल फ्लावर देख, दिस इज द पेडिसिल ऑफ द फ्लावर, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखुछ है पेडिसिल. देन लोअर ग्रीन होलटा देख, this green hole, this is the calyx hole, this is calyx hole. Then जो colored petals देखुछ, these are petals, 5 petals forming the corolla hole, and this is the androecium hole. Androecium hole एठी united ही जाइछि monadal first condition रे अछि stamens. So indefinite number of stamens are there, and देखो एडो सब हला तार फिलामेंट, एटा आंथर, फिलामेंट सब यूनाइटेड ही जाइछि एवं फिलामेंट यूनाइटेड ही गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करछि, एंड टिप्स देखो एटी आंथर सब अछि, दीज आर आंथर्स. एंड इनसाइड दिस स्टामिनल ट्यूब ताको हम जदि कार्पेल देखिबा, कार्पेल हमें देखिबा, सपोज देख आम ये करोला होल को धर रिमूव करदेबा ताले हमें कार्पेल देखि परिबा. दिस इज द कैलिक्स होल. This is androecium hole. This is corolla hole comprising 5 petals. This is calyx hole comprising 5 sepals. And this is the gynoecium hole. The base of the gynoecium, the carpels are united. Here the carpels are united. बाहर देखा सिंगल ओभारी, बट ये जो सिंगल ओभारी देखुच आम जब ट्रांसफर सेक्शन नवा ताले 5 चेम्बर थाए. एंड दिस इज स्टाइल चेंडीगला टे स्टाइल, एंड ये देखुचे आम 5 स्टिग्मा, स्टिग्मा पार्ट फ्री अच्छी. तो दिस आर 5 स्टिग्मास. ओके. तो नंबर ऑफ कार्पेल हियर इज 5 एक्चुअली. कहीं तुम यदि नंबर ऑफ लोब देख ओभारी ताहले सेटा देखियो तुम कौन 5 चेम्बर थी. आठ आम स्टिग्मारे भी देखिले कौन 5 स्टिग्मा देखिले. तेणु नंबर ऑफ कार्पेल एक्चुअली ये 5 और सिनकार्पस कंडीशन रे अच्छे है. तब आम आसवा गोटे इंडिविजुअल स्टामेन रो स्ट्रक्चर देखा. इंडिविजुअल स्टामेन रो स्ट्रक्चर ये आम देखा जदि इंडिविजुअल स्टामेन हैज ए लॉन्ग stalk like structure that is known as filament and a bilobed anther. Generally bilobed होता है anther. Sometimes unilobed anther मध्य थाए. एमती आमर हिबिस्कस रोजा साइनेसिस हम देखली मंदार फूल रे तार यूनिलोब्ड आंथर गोटे लोब थाए. ये कि आम क्लीयरली देखिपारे 2 लोब्स. ओके. आपको धर ट्रांसफर्स सेक्शन नवा, जदि आम ये बाइलोब्ड आंथर ट्रांसफर्स सेक्शन नवा टीएस नवा, टीएस रे हमको देखा गोटे देख आउटर गोटे वाल लेयर रहा, आउ इच लोब रे 2टा लेखा आमर पोलेन चेम्बर थी. 2 पोलेन चेम्बर्स इन इच लोब. ताको डाइथिकस कंडीशन कहते. जदि 2 पोलेन चेम्बर थाए पोलेन सैक जोड़ा कहते, 2 पोलेन सैक इन इच लोब. ये लोब रे से पोलेन सैकटा टे लंबाड़िया हो ट्यूब लाइक हो, कहीं आर जी लंबा से पूरा लंबा हो रही. ट्रांसफर सेक्शन रे हमको एमती राउंड देखा जाउछि, किंतु एक्चुअली एटा लंबा टाइप रो इलोंगेटेड सैकटा. तो 2 पोलेन सैक्स इन ईच साइड ऑफ द लोब ताको डाइथिकस कंडीशन कहते. डाइथिकस है. जब सिंगल लोब रही था मोनोथिकस. डाइ मान जान 2, मोनो माने 1. तो मोनोथिकस कंडीशन कहुए. ना आम देखुचे जो पोलेन सैक भीतर सब स्मॉल पोलेन ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड ईच पोलेन सैक जो ईच आंथर लोब
लोब गोटे लंगिट्यूडिनाल डेहिसेंस लाइन थाए, लाइन ऑफ डेहिसेंस थाए जोटी सेटा ब्रेक करे। मैच्योर होला परे आंथर लोब श्रिंक करिवो एवं श्रिंक करके ड्राई हो गला पर से लाइन ऑफ डेहिसेंस रे ब्रेक करिवो टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स आउटसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। ओके, देन आमे देखिबा जे केमिते हुए कौन गोटे माइक्रोस्पोरांजियम जोटा आम कहूचे माइक्रोस्पोरांजियम। माइक्रोस्पोरांजियम कौन ना आम देखा कौन स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर कौन गोटे यंग आंथर आम धर ट्रांसफर्स सेक्शन जदि नवा आंथर तो मैच्योर हो नथि गोटे यंग आंथर तार गोटे टीएस निगला ये देखुचे यहाँ गोटे बाइलोब्ड आंथर। बाइलोब्ड आंथर इच आंथर हैव 2 पोलेन सैक्स। यहाँ हूँ गोटे गोटे पोलेन चेम्बर पोलेन सैक तार गोटे आउटर लेयर देखुच है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरांजियम गोटे आउटर लेयर रहा ताको कहती एपिडर्मिस है। तापर नेक्स्ट टू माइनर टू दी सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस अनदर सिंगल लेयर्ड slightly larger cells are present known as endothecium. Endothecium cells have thick walled cells and they helps in the dehiscence of anther when it mature. जेतले एटा मैच्योर हो जाए से डेहिसेंस माने कौन ब्रेक ओपन जेतले एटा आ भितर जेहेतु आमर पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होची से पुणी बाहर को तो आसवा दरकार ना तेणु केमिति बाहर को आसो कि गोटे ब्रेक हेले तो फाट हेले से वाल से जो वाल सराउंडिंग द पोलेन सैक्स तो ये जो जगटा आम देखुचे गोटे ग्रुप भाया हो जाइए जगटा को कहते स्टोमियम। स्टोमियम ये गोटे ये जगह ही गोटे लाइन ऑफ डेहिसेंस थाए और से ब्रेक हुए। ब्रेक हेले से ओपन हो जाए ओपन हेले जो पोलेन चेम्बर सब पोलेन ग्रेन्स रिलीज बाहर को रिलीज हुए। अच्छा, एबे गले आम देखिले कौन फास्ट आउटर मोस्ट लेयर हूँ सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स नोन एज एपिडर्मिस। इनर टू द एपिडर्मिस देयर इज ए एंडोथेसियम लेयर व्हिच इज आल्सो सिंगल लेयर। देन 2 to 3 बा 3 to 4 लेयर्स पेरेनकाइमाटस वाल लेयर थाए ताको मिडिल लेयर्स 3 to 4 लेयर मिडिल लेयर थाए। देन इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टैपेटम। जो ग्रीन लेयर टा डायग्राम रे देखुछ दैट इज नोन एज टैपेटम है। इनर मोस्ट लेयर है टैपेटम। टैपेटम आर नरिशिंग इन नेचर माने एटार बहुत न्यूट्रिएंट थाए जोटा कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन बेले न्यूट्रिएंट सप्लाई करे। मेल गैमेटोफाइट जो फॉर्मेशन हुए तो न्यूट्रिशन सप्लाई काम हो टैपेटम लेयर। ओके, तो यहाँ है कौन देखा जो टैपेटम लेयर सराउंडिंग ए मास ऑफ सेल जोटा कह जाए स्पोरोजिनस सेल बा स्पोरोजिनस टिश्यू। जो गोटे मास ऑफ सेल देखुच ऑरेंज कलर जो सेल गुड़िक ताको कहूँ स्पोरोजिनस टिश्यू बा स्पोरोजिनस सेल। ओके, से जो स्पोरोजिनस सेल जी रहा इंडिविजुअल सबू ऑल द स्पोरोजिनस सेल्स एक्ट्स लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। आम यदि मेओसिस पढ़ी थो तुम जानी जे मेओसिस कौन हुए ना मेओसिस हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल रे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आम देखिले कौटी अच्छी ना आंथर आमर जो लोब देखुचे पोलेन सैक से पोलेन सैक भितर स्पोरोजिनस टिश्यू जो थाए से इंडिविजुअल ईच स्पोरोजिनस सेल एक्ट्स लाइक ए माइक्रोस्पोर मदर सेल बाई जे माइक्रोस्पोर मदर सेल जोटा कि डिप्लॉयड ये सब सेल बर्तमान डिप्लॉयड अच्छी है। नाउ मेओसिस टेक्स प्लेस ओनली इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो ऑरेंज सेल गुड़िक आम देखुचे से ऑरेंज सेल गुड़िक ही केवल मेओसिस हम। सपोज दिस इज वन माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो ये आमर मेओसिस है। तो माइक्रोस्पोर केमिति फॉर्मेशन हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फास्ट आम देखा कौन माइक्रोस्पोर मदर सेल आम देखिले तो यू आम माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के से प्रोसेसटा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन कहूँ फास्ट आम जानले स्ट्रक्चर ऑफ आंथर स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन जानले। सेकेंड आम कौन जानले टीएस ऑफ आंथर देखिले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम देखिले।
तापर थर्ड आम कौन देखिले जो एबे आम देखिए माइक्रो थर्ड फेज है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ओके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल आम देखिले कौटी आमर पोलेन चेम्बर भितर बा पोलेन सैक भितर से टापेटम ता चारिपटे सराउंड होकर रही इंडिविजुअल ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स मेयोसिस रो एंड रे आम जाने 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हुए तो 4 हैप्लॉइड सेल एटी फॉर्मेशन हैला एंड दे रिमेन साइड बाय साइड टिल द आंथर डेहिसेस आंथर डेहिसेंस बा ब्रेक ओपन होगा पर्यंत से लगी लगी रही था तेणु माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते एमती 4टी माइक्रोस्पोर जो फॉर्मेशन है से परस्पर सहित लगिकी रही था माइक्रोस्पोर टेट्राड कह जाए देन व्हेन आफ्टर डेहिसेंस कौन हुए से सेपरेट होते जो मैच्योर हो जाए से सेपरेट हो जाते सेपरेट हो गले ये गोटे स्फेरिकल इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर इज ए स्फेरिकल और पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर बा सेप रे स्फेरिकल होता है बा पॉलीहेड्रल माने बहुत कोण थी जमी पॉलीहेड्रल हाँ फुटबॉल टाइप रही था तो माइक्रोस्पोर सेपटा आइदर स्फेरिकल ना पॉलीहेड्रल टाइप होता है आउ दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट हैज आल्सो 2 वाल लेयर देख आउटर वाल गोटे देखुचे आम इनर वाल गोटे देखुचे यहाँ है आउटर वाल जोटा कहते एक्साइन आउटर वाल टी कहते एक्साइन एंड एक्साइन इज भेरियसली स्कल्पचर्ड माने एक्साइन आउटर साइड रे सरफेस रे विभिन्न प्रकार पैटर्न आम देखा पाया कौन स्पाइनस हो कौन हेक्सागन टाइप कौन विभिन्न टाइप डिजाइन सब होता है एंड द स्टडी ऑफ पोलेन एवं गोटे न्यू ब्रांच स्टार्ट होती कहते पालिनोलॉजी कहुचे स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन्स स्टडी ऑफ पोलेन ग्रेन्स कहुचे पालिनोलॉजी अच्छा ये जो आउटर कोट कौन कहते एक्साइन आउटर सरफेस रे वेरियसली डिजाइंड होता है अच्छा एवं दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ ए वेरी रेजिस्टेंट केमिकल known as sporopollenin is very resistant to high temperature acidic condition alkaline condition जेकोसी कंडीशन रे से स्पोरोपोलेनिन डिस्ट्रॉय हबो नहीं तेणु मैक्सिमम फसिल पोलेन ग्रेन मिले कहीं से बहुत वर्ष धरी सेमती जेहेतु स्पोरोपोलेनिन आउटर कोट होता है पोलेन ग्रेन डिस्ट्रक्शन हो न था वर्ष वर्ष धरी तेणु फसिल फॉर्म रे पोलेन ग्रेन गुड़िक प्राय मिले अच्छा तार जेहेतु यहाँ बहुत स्ट्रंग आउ रेजिस्टेंट तेणु से गोटे गोटे पॉइंट रे एमती ये गोटे पॉइंट रे गोटे होल भाया थाए से होल टी कहते जर्म पोर टी थाए होल टे थाए कहते जर्म पोर है देन नेक्स्ट टू इनर टू द एक्साइन लेयर अनदर कंटिन्यूअस थीन लेयर इज प्रेजेंट नॉन एज इंटाइन कहते इंटाइन है and inside this a small amount of cytoplasm and a haploid nucleus है haploid nucleus पहला this is a structure of microspore होची कौन the first cell of male gametophyte देख जनरली प्लांट रे कौन हुए ना दीटा जेनेरेशन प्राय देखा जाए गोटे है गैमेटोफाइटिक जेनेरेशन आ गोटे है स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन है स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन गैमेटोफाइटिक जेनेरेशन लाइफ साइकिल एटा अल्टरनेट करूँ सब एनी प्लांट रो जो लाइफ साइकिल अच्छी गैमेटोफाइटिक जेनेरेशन आ स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन गैमेटोफाइटिक जेनेरेशन होची हैप्लॉइड पीरियड आ स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन है डिप्लॉइड पीरियड तार लाइफ रो एंड इट अल्टरनेट्स विथ ईच अदर है जिते आम लोअर क्लास आल्जी
किछि देखा से गैमिटोफाइटिक जेनेरेशनटा डोमिनेट थाए तार से जो ऑर्गेनिज्म से अधिकांश समय तार लाइफ रे हैप्लॉइड स्टेज रे रहे केवल जितेबाला गैमिट हैप्लॉइड सेल रु गैमिट फॉर्मेशन होची मेटामॉर्फोसिस हे अच्छा गैमिट फ्यूजन है फ्यूजन है जाइगोट फॉर्मेशन कला डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इमीडिएटली अंडरगोज मेयोसिस फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स एंड दिस 4 हैप्लॉइड सेल रु कौन होची ना गोटे गोटे गैमिटोफाइट स्टार्ट होची तेणु तार लाइफ रे स्पोरोफाइटिक जेनेरेशन कहले डिप्लॉइड जेनेरेशन बहुत कम समय केवल ओनली रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट आउ टिके आगु जदि आम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को देखा मस जातीय फर्न जातीय प्लांट रे सेठी आम देखा प्राय तार लाइफ रे सेमानकर लाइफ रे हैप्लॉइड जेनेरेशन बा हैप्लॉइड स्टेज आउ डिप्लॉइड स्टेज प्राय पाखापाखि समान भाव में थाए इक्वाल भाव में थाए तेणु ताको अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन आम कहू है तापर आम आउ टिके हायर प्लांट को जीवा गैमिटो सॉरी जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म को जीवा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ग्रेजुअली स्पोरोफाइटिक स्टेज रो टाइम पीरियड इंक्रीज करी जीवो एवं गैमिटोफाइटिक फेज जोटा माने हैप्लॉइड फेजटा डिक्रीज करी जीवो हैला तो एंजियोस्पर्म रे आम पढुचे जेहेतु एठी गोटे भारी स्मॉल गैमिटोफाइट आम पाइबा जोटा कि इंटरनल थाए स्पोरोफाइट भितर ही सेटा थाए इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस न थाए तार स्पोरोफाइट भितर ही गोटे स्मॉल स्ट्रक्चर पाइबा जोटा कि मेल गैमिटोफाइट आउ सेमती फीमेल सेक्स ऑर्गन रे गोटे फीमेल गैमिटोफाइट आम पाइबा एटी जन मेल गैमिटोफाइट फॉर्मेशन करिवो मेल गैमेट सेट सेमती फीमेल गैमिटोफाइट फॉर्मेशन करिवो फीमेल गैमेट हैला त आम आसीबा पॉइंट को एटी आसिले तेटी कौन है ना माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ ए रिड्यूस्ड मेल गैमिटोफाइट एटी गैमिटोफाइट जेनरेशन वेरी मच रिड्यूस्ड ओनली 3 सेल्ड स्ट्रक्चर मात्र 3टी सेल रे मेल गैमिटोफाइट होता है तो ये नेक्स्ट एठू एति जो है एटा है कौन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पीरियड गला तापर आम ए माइक्रोगैमिटोजेनेसिस पढ़ा एबे हम पढ़िया कौन माइक्रोगैमिट बा मेल गैमिट केमती फॉर्मेशन होची तो यहाँ है माइक्रोस्पोर गोटे फास्ट गोटे अनइक्वल डिविजन हम अनइक्वल डिविजन है गोटे लार्ज सेल फॉर्मेशन हम कहते वेजिटेटिव सेल आ गोटे स्मॉल बाई कन्वेक्स सेप्र गोटे छोट सेलटे फॉर्मेशन हुए ताकू कह जाए जेनेरेटिव सेल ए वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते ट्यूब सेल है आउ गोटे स्मॉल जेनेरेटिव सेल है मोस्ट ऑफ द केस अराउंड 60% ऑफ द स्पीसीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे जो 2 सेल्ड स्टेज रे आंथर डेहिसेंस हो जाए माने ये ब्रेक ओपन हो जाए एटा वालटा ब्रेक हो जाए ये रिलीज्ड दि मेल गैमिटोफाइट बा जो पोलन ग्रेन भितर दीटा सेल बर्तमान होती आम देखुचे यही स्टेज रे ही सेटा बाहर को रिलीज हुए है आउ जो 40% केस रहिला से एमती 3 सेल स्टेज रे डेहिसेंस हुए माने बाहर को आसे तो जो 3 सेल स्टेज नेक्स्ट डिविजनटा जो होची सेटा केवल जेनेरेटिव सेल ही हम आउ वेजिटेटिव सेल बा ट्यूब सेल आउ डिविजन होएनी तेणु ये जो आम देखुचे जेनेरेटिव सेल ये जेनेरेटिव सेल न्यूक्लियस आउ थे डिविजन हम एवं डिविजन नहीं कौन हम 2टी न्यूक्लियस परिणत हम सराउंडिंग सेल वाल से दीटी को कह जाए कौन मेल गैमिट ये छोट छोट दीटा जो स्ट्रक्चर आम देखुचे सीटा है मेल गैमिट 2टी मेल गैमिट है गोटे वेजिटेटिव सेल अच्छी यहाँ बर्तमान गोटे 3 सेल्ड स्टेज आम देखिले तो किसी पोलन ग्रेन बा मेल गैमिटोफाइट यहाँ है गोटे कौन मेल गैमिटोफाइट किसी केस रे 60% केस रे 2 सेल स्टेज रे रिलीज हुए एवं तापर जो 3rd डिविजनटा परे हुए बाहर आसला परे आउ किसी केस रे एटा 3 सेल हो गला परे ही से आंथर रो रिलीज हुए है तो डेहिसेंस ऑफ आंथर होटा है ये जो बाहर डेहिसेंस हो पोलन ग्रेन बाहर आर बर्तमान नेक्स्ट फेट कौन से कुआड़े जीव बाहर कुआड़े जीव आमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन मेल गैमिट फॉर्मेशन हो गला फीमेल गैमिट कौटी फॉर्मेशन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुझे तुमको कहली यहाँ है कौन कार्पेल ओभारी स्टाइल स्टिग्मा देखली ये जो ओभारी भितर आमर अच्छी ओव्यूल
ओव्यूल है कौन मेगास्पोरांजियम ओभारी को कहते ओव्यूल को कहते मेगास्पोरांजियम। ये जो मेगास्पोरांजियम ता भितर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमिटोजेनेसिस हेग्री फीमेल गैमिट फॉर्मेशन हम। ये से हमार फीमेल गैमिट फॉर्मेशन होगी रही फीमेल गैमिट जेहेतु फ्लावर भितर से कार्पेल भितर ही फॉर्मेशन है सी बाहर को रिलीज होनी तेणु मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो आम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रे दीटा फेज मुझे तुमको कही इंपोर्टेंट फेज तार गोटे है मेयोसिस मेयोसिस होकर गैमिट फॉर्मेशन होची आउ गोटे है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फर्टिलाइजेशन माने कौन फ्यूजन ऑफ टू सेल मेल गैमिट हैप्लॉइड फीमेल गैमिट हैप्लॉइड दीटा सेल भितर गोटे फ्यूजन हम ताको कुआ जाए फर्टिलाइजेशन। से मेल गैमिट तो आम देखिले बाहर को बाहरी आसिला किंतु फीमेल गैमिट तो गोटे कन्स्टेंट तार भितर रही तेणु यही पर्यंत मेल गैमिट को आसवाक पड़ो है तो केमिति आसो ना ये जो मेल गैमिट फॉर्मेशन है जो मेल गैमिटोफाइट सहित सी बाहर पर पॉलिनेशन हम है पॉलिनेशन इज ए सेपरेट चैप्टर मुझे आउ थे गोटे वीडियो बनइबी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे जनराली एठी आम ता विषय डिटेल डिस्कसन करवानी एबे खाली मुझे जस्ट टिके तुमको कहीदेवी पॉलिनेशन जदि दी प्रकार अच्छी टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन गोटे है कौन क्रॉस पॉलिनेशन आम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा फोर्थ स्टेज है कौन माइक्रोगैमिटोजेनेसिस जो थे कि मेल गैमिट फॉर्मेशन होगला है मेल गैमिट फॉर्मेशन होगला एबे मेल गैमिट बाहर को आसो सी फीमेल गैमिट पर्यंत जीवाई पॉलिनेशन हवा दरकार। तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेल गैमिट्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ये देखुचे आम जो स्टिग्मा अच्छी कार्पेल यहाँ देखिए आम स्टिग्मा टिप्टा स्टाइल टिप्टा को स्टिग्मा कहते ये स्टिग्मा पर्यंत सी आसो है स्टिग्मा उपर जा पड़ से प्रोसेस कहते पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स जोटा कि गोटे मेल गैमिटोफाइट भर मेल गैमिट अच्छी तो पोलेन ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर एंड ट्रांसफर्ड बाय वेरियस मीन्स टू द कौटी स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ये पर्यंत सी आसबार अच्छी। जदि सेल्फ पॉलिनेशन होता है माने पॉलिनेशन इज टू टाइप्स पॉलिनेशन दी प्रकार सेटा मु डिटेल पढ़ेबी जो पॉलिनेशन पर करी वीडियो से डिटेल कहबी एंड आउट है क्रॉस पॉलिनेशन ओके। सेल्फ पॉलिनेशन में कौन ना अधिकांश एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होचंदी बाइसेक्सुअल बा हर्माफ्रोडाइट तामाने सेम फ्लावर रे बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दीटा जाक थाए है या कहते बाइसेक्सुअल फ्लावर बा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। In some cases, male flowers and female flowers are different, and in monoecious plant, both male flower and female flower present in same plant, just like cucurbita मैंने कखारू कलर आइतरे देखिबो सेम प्लांट रे मेल फ्लावर भी थाए फीमेल फ्लावर भी थाए। बट इन केस ऑफ पपैया the male flower and female flower born by two different plants male plant अलग female plant अलग से कैसे ताको डायोइसियस कहते आ जदि सेम जेमती आम ये देखिले सेम फ्लावर रे बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अच्छी ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर आ जदि एंड्रोसियम गोटे डिफरेंट फ्लावर थी गाइनोसियम डिफरेंट फ्लावर मैंने मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट होते ताको कह जाए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इन केस ऑफ unisexual flower cross pollination is very necessary माने cross pollination is the only mean of pollination but in case of bisexual flower some cases self pollination occurs एना देखो सेम एठी आंथर रे हमरो पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन हला एठू आंथर रु एठी सी स्टिग्मा ऊपर पड़िबो तेनो एठी सेल्फ पॉलिनेशन कहै जिवो जदि सेम फ्लावर रो आंथर रु सेम फ्लावर रो स्टिग्मा ऊपर पड़िला ताहले सेटा हला सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज गोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर बा यूनिसेक्सुअल फ्लावर रु पोलेन ग्रेन कि आउ गोटे डिफरेंट
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ହେଇଥିବା ମାନେ ସେମ୍ ସ୍ପିସିଜ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଇଥିବା ଫ୍ଲାୱାରରେ ଆମଙ୍କର ଏଠୁ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଗୋଟେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନା। ସୋ ଭେରିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍। ତ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ହେଇପାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଏନିମୋଫିଲି କହନ୍ତି। ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଫିଲି କହନ୍ତି। କିମ୍ବା ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟୋମୋଫିଲି କୁହାଯାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଜୁଫିଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ହେଲା। ସୋ ପଲିନେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଆସିକି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର 3 ସେଲ୍ଡ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ୍ ଏଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ଆମର ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଲିନେସନ୍ ଆସିକି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ development in male gametophyte will takes place after the deposition of microspores by जो हमर male gametophyte जोटा सेटा on स्टिग्मा ऊपर पड़ीगला परे तापर नेक्स्ट डेवलपमेंट हम हमर ए जो 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट रे हैला। अच्छा मु आज एतिकी पर्यंत पढ़ेबी, एति पर्यंत कहबी। आउ नेक्स्ट जो रहिला हमरो नेक्स्ट क्लास रे बा नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमको कहबी आउ माने व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन जोटा कि हमरो गाइनोसियम बा कार्पेल, हाउ मेगा स्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, हाउ मेगा गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, फीमेल गैमेट केमती फॉर्मेशन हबो, देन व्हाट इज द नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट and double fertilization which is very important. So एतिक मु नेक्स्ट पीरियड रे बा नेक्स्ट वीडियो रे कहबी। So for today thank you. Do share, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification. तो प्रेस कर बेल आइकन जो बाहर देखिबो ताको प्रेस कर दबो आ सब्सक्राइब करिवो। सब्सक्राइब कले से बेल आइकन टी देखाए सेटा प्रेस कर देले तुमको मु जो न्यू वीडियो छाड़ी तार सब नोटिफिकेशन तुम पाखको जीवो। थैंक यू।